first step is supposition. I mean, let this is equal to a over x plus 1, b over x minus 2, multiply throughout with x plus 1, x minus 2. These are the first two steps. I hope you have written these. So what values of x should be used to find a and b? -1 and +2. Good. So if you use x is equal to -1, you will get the value of a. What is that value? 5/3. So Temur is saying 5/3. And what is b? 1/3. How to write the answer now? Yes, बिल्कुल ठीक है, आप लिखेंगे, but how to write? आप a में आप a is in the numerator and you got a fraction for that. A is 5/3. So see here, please, how to write your answer which are in fraction form. So you will write, actually देखा है तो वैसे तो you बन रहा है 5/3 over x plus 1 and b is 1/3 over x minus 2. But we know we can write 5/3 like this: 5 in the numerator and 3 in the denominator. 5 over 3x plus 1 plus 1 over 3x minus 2. So that is how you will write your answer for fraction. Mean denominator के साथ लिख देंगे और numerator as it is numerator. नहीं, फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है ना, स्टार्ट में तो इजी होते हैं. Should we further expand or let it be in this form? No, just keep it in this form. She wants to say कि क्या हम the 3 multiply कर दे 3x plus, no need for that. और दोबारा प्लीज एलसीएम नहीं ले लेना, क्वेश्चन बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं. Resolve into partial fraction. It is 5x minus 1 over x minus 1 x plus 2x minus 3. Resolve this into partial fractions. How many fractions will there be? This time 3. So you need to suppose now a over x minus 1 plus b over x plus 2 plus c over x minus 3. Sorry, मुझे नहीं समझ आई. Previous
1/3x minus 6। हाँ जी, ये कैसे लिखा मैंने आंसर? देखिए एक्चुअली तो आंसर ये था ना, ऊपर ए आया था, ये बी आया था। तो आप का ये जो नंबर होता है, अगर आप लिखें यूं 5/3 डिवाइडेड बाय 4 अगर लिखें, तो आप लिख सकते हैं इसको 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो वो डिनोमिनेटर 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। G, no, denominator gets multiplication with the numerator. If you have A over B and C over D, if you have fraction और उस फ्रैक्शन में there is a fraction in the numerator and fraction in the denominator, तो उसकी multiplication का क्या मेथड होता है? A gets multiplication with D, mean numerator gets multiplication with denominator and denominator with numerator. So AD over BC आता है. So if you multiply throughout with x minus 1, x plus 2, x minus 3, so with A, x minus 1 will be cancelled out and you will be left with A times x plus 2, x minus 3. With B, you will get x minus 1, x minus 3. With C, you will get x minus 1, x plus 2. So first use x minus 1, 0 mean x is equal to 1. Then put x plus 2 is equal to 0 mean x is equal to minus 2. Then put x minus 3 is equal to 0 mean x is equal to 3. By putting x minus 1 is equal to 0, your terms of b and c are involving x minus 1. So b and c will be 0. The terms of b and c will become 0, not b and c itself. Yes, Amna, what's the value of a? Minus 2/3. Okay, let's see. Hamna Noor is also saying minus 2/3. So confirmation, it's a is minus 2/3. Sorry, ना कर सॉल्व करके बताऊं ये जी। -2/3 कैसे आया? x में हमने पुट किया 1, ठीक। x में हमने इधर भी 1 पुट किया, तो 1 + 2 is 3 and 1 - 3 is -2. So 5 टाइम और b और c वाली टर्म 0 हो जाएंगी. So 5 - 1 is 4 is equal to -6a. So a is
minus 2 by 3 minus 4 by 6, which is minus 2 by 3. The value of B is G. Afan, what did you get for B? Okay. Faida, did you get the value of B? What is that? Minus 11 by 15 or 13? Negative? Minus 11 over 15. Bilal, Murtajiz, they're also saying it's minus 11 by 15. So B is minus 11 by 15. नहीं मुझे समझ आई क्या कह रहा हाँ जी नहीं वहां पे भी हमने सेपरेट किया था देखें इधर जब 2 थे तो आपने x प्लस 1 को मीन 0 किया था एक x की वैल्यू माइनस 1 यूज की थी फिर सेपरेट हमने x माइनस 2 की वैल्यू 0 यूज की है देखें और x इक्वल टू 2 वो भी अभी भी किया तो वहां पे क्योंकि 3 वैल्यूज थी तो आपने पहले x माइनस 1 0 पुट किया मीन x इक्वल टू 1 देन x प्लस 2 0 पुट किया मीन x इक्वल टू माइनस 2 देन x माइनस 3 0 किया x इक्वल टू 3 जी द वैल्यू ऑफ c इज 7 over 5 c is 7 by 5 Hamna is saying it's 1 Murtajiz is saying 7 by 5 so you are getting 7 by 5 so c is 7 by 5 please check your calculation at this level calculation mistakes nahi honi chahiye so once we got all the values of a b and c so let's write the partial fractions so a is negative 2 by 3 how to write the answer I will write negative 2 in the numerator over 3 x minus 1 plus the value of b is minus so instead of plus I will write here minus 11 by 15 in the denominator x plus 2 and the value of c is positive 7 by 5 so 7 by 5 x minus 3 any question okay if you observe अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको all the denominators were linearly factorized mean here you see कि आपका denominator linear mean there were all three factors and all three were linear so in the previous case there were two denominators and both were linear so what if we have a quadratic की डिटेल हम पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखूंगा that can be factorized to linear for example if the question is to resolve into partial fraction like x 3x plus 1 over x square minus 4 so x square minus 4 your denominator is quadratic so your first priority should be to factorize your denominator if it is possible is it possible here yes factorization normally क्या होती है common आता है या मिड टर्म 3 टर्म्स हो तो मिड टर्म ब्रेक होगी और अगर 2 टर्म्स हो दोनों स्क्वायर बन रहे हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मीन दिस वन a square minus b square is equal to
a plus b, a minus b. So if you see कि आपका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है और अगर वो फैक्टराइज हो सकता है तो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दैट. So here the factorization of x square minus 4 is, it's not x minus 2 whole square, remember. x square minus 4 को हम x minus 2 whole square लिख सकते हैं? No, this is wrong. x minus 2 whole square को अगर ओपन करें तो you get x square minus 4x plus 4. So हम ऐसे नहीं लिख सकते. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? We can write it like x square minus 2 square, separate squares, and the identity a square minus b square is a plus b, a minus b. So it will be 3x plus 1 over x plus 2, x minus 2. So originally your denominator was quadratic and you have factorized it and you have written it in terms of two linear factors. अब आगे क्या process होगा? The same will be repeated, mean you have to find its partial fraction. You will say let this is equal to a over x plus 2 plus b over x minus 2. मैं आगे नहीं कर रहा, I hope आप कर लेंगे. So just the purpose of that example was कि आपको before starting the question you need to see if your denominator is quadratic, तो उसको पहले अगर factorization possible है तो factorize it first. Okay, now here is a question for you. Three over x cube minus x resolve into partial fraction. This is written 3 over x cube minus x. x cube minus x लिख लें, अभी इधर आया नहीं है, पता नहीं आ गया. Resolve this into partial fraction. Only the first step will be different. You need to factorize your denominator. So how to do its factorization? Afan, is this a complete factorization? आगे भी होगा, further factorization भी होगी. मैं just कर देता हूँ. See, if your denominator is x cube minus x, you can see there is a common x first. So if you take x common, inside you will get x square minus 1. Is that the complete factorization? We can further factorize. X square minus 1 is basically x square minus 1 square. So which will be x plus 1, x minus 1. So the factorization of x cube minus x is x plus 1, x minus 1. How many fractions will be there now? How many partial fractions will there be? 3. एक का denominator होगा x, the other will have x plus 1, and the third will have x minus 1. So now start. Let this is equal to a over x plus b over x plus 1 plus c over x minus 1. Yes. So first step तो आप करेंगे कि multiplication होगी, तो you will get 3 is equal to a times x plus 1, x minus 1, b times x into x minus 1, c times x into x plus 1.
So put x is equal to 0 एक, then put x is equal to x plus 1 is equal to 0 mean x is equal to -1, और फिर आप पुट करेंगे x minus 1 is equal to 0 mean x is equal to 1. So you'll get the values of a, b and c. A is Moise. What's the answer of a? 0. वो कैसे? मोइस किया या वैसे ऐसे गेस कर दिया? A is -3. What is B? 3 by 2. And C is also 3 by 2. So your partial fractions are -3 by x plus 3 by 2 x plus 1 plus 3 by 2 x minus 1. Is that clear? Any question? ये हम अपनी type 1 questions complete कर चुके हैं. In this chapter, in this chapter of partial fraction, there will be 3 types of question. और सब में method यही होगा, थोड़ा difference होगा. So we have completed the first type of question and how to identify which type 1, 2, 3 कौन से. So type 1 basically when your all the denominators are either linear or maybe factorized to linear. ये आपके सारे या तो डिनोमिनेटर लीनियर गिवन थे या अगर क्वाड्रेटिक था या क्यूबिक था तो उसको आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते थे. Okay, second type now, in which your denominator will be linear repeated. Linear repeated mean क्या? Mean अगर लिखा हो x minus 1 again x minus 1, so what does it mean? It's basically x minus 1 whole square. ऐसे जब आपका डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स आएंगे. एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन की. 3x over x minus 1 x plus 2 whole square. Now that first part x minus 1 is a linear. Second भी linear है but linear repeat हो रहा है x plus 2 into x plus 2. So this is called linear repeated. So difference क्या है इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में? फर्स्ट स्टेप का आप कह रहे हैं x plus 2 लिखेंगे, मतलब आपके कहने का, चलें मैं 8th क्लास में वापस जाता हूं. देखिए अगर कहीं पे x plus 2 इसका डिनोमिनेटर था और इसका भी डिनोमिनेटर अगर x plus 2 था तो उसका एलसीएम x plus 2 ही होता था या x plus 2 होल स्क्वायर होता था? x plus 2 ही होता था, स्क्वायर नहीं होता था. हाँ अगर यहाँ पे हो x plus 2 और यहाँ x plus 2 होल स्क्वायर हो तो फिर एलसीएम क्या होता था? Then the LCM was x plus 2 whole square. So इसको अगर आपने LCM आपका x plus 2 whole square आ जाता है तो इसकी अगर रिवर्स सपोजिशन करनी हो तो आप कैसे करेंगे? It means there can be a number a here over x plus 2. There can be a number b here, उसका denominator will be x plus 2 whole square. और फर्दर अगर एक एग्जांपल दूं, 8th क्लास 3 over x minus 1 plus 2 over x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 5 over x minus 1 होल क्यूब अगर करते तो इसका एलसीएम क्या था? x minus 1 होल क्यूब. मीन आपका एंड पे आंसर में डिनोमिनेटर वाज x minus 1 होल क्यूब. तो इसका मतलब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो वी नीड टू राइट द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज x minus 1 स्क्वायर भी x minus 1 होल क्यूब भी. अगर कोई उनमें से एक मिसिंग हो रहा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू 0 आ जाएगी फिर. सो I am going back to the original. It is linear repeated जब आपके पास ये questions होंगे. So the first step will be different and that will be supposition.
इसको लेट कैसे करेंगे? a over x minus 1. Now the second x plus 2 whole square is repeated. So how will you let that? b over x plus 2 plus c over x plus 2 whole square. That's the first step. और अगर यहाँ होता कोई और क्वेश्चन, एग्जांपल, second question की example, if the question is like 2x minus 7 over x plus 2 x minus 1 whole cube, who will tell me the supposition for this? Hassan. नहीं, इसकी supposition बताया ना, a over what? A over x plus 2, right? Why not x minus 1? X minus 1 भी तो हो सकता है denominator. So b over x minus 1 plus c over x minus 1 whole square plus d over x minus 1 whole cube. और इवन अगर x minus 1 whole power 4 भी होता तो हम आगे क्या लिखते? e over x minus 1 whole power 4. जी जी, हाँ, अपने आप रिवाइज करनी होती है ना कभी कभी, तो लिखनी चाहिए. अल्फा शुरू कर दें जी. Yes, Tanya. If it's x plus 2 whole square, then why does there have to be an x plus 2 term in the denominator? Why can't it just be That x is plus not 2 whole square? necessary. That is not necessary कि it will be always there. Okay, But it can be अगर नहीं 0. Yes, I होगी तो understand. आप, अगर नहीं होगी तो a0 आ जाएगा आपका कांस्टेंट पे. Okay, sir, I But we need understand. to mention क्योंकि हमें तो नहीं पता कि है या नहीं. Okay, अब कोई एक क्वेश्चन से कंप्लीट अटेम्प्ट करते हैं. The question is to resolve into partial fraction and the question is 2x minus 1 over x, sorry, सेकंड टाइप की क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे. अब बताता हूं. हो गया? ओके, द क्वेश्चन इज, अब मैं एक सेकंड स्टेप टाइप का क्वेश्चन एक कंप्लीट हम अटेम्प्ट करते हैं. So x minus 1 x plus 2 whole square, that's a question. So I hope you understand the first step, which is we will let this as a over x minus 1 plus b over x plus 2 plus c over x plus 2 whole square. So second type जब आई तो एक तो let करने में थोड़ा सा डिफरेंस आया. आगे क्या डिफरेंस आता है इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं. Repeat the same steps, mean multiply x minus 1 into x plus 2 whole square on the other side. So you will get 2x minus 1 is equal to, a will get multiplication with x plus 2 whole square, b will get multiplication with x minus 1 और एक x plus 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x plus 2 रह जाएगा, and c will get multiplication with x minus 1 only. So what values of x should be used? पहले आप x minus 1 0 पुट करें, mean put, you will get x is equal to 1. जी पुट करें, क्या आ रहा है? If you put x is equal to 1, so x minus 1 0 mean b and c वाली term will become 0. So what are you getting for a? 1 by 9. So a is 1 by 9. Now put x plus 2 0 mean the second denominator, ये वाला. पहले आपने x minus 1 0 put किया, now put x plus 2 0 mean x is equal to minus 2. So now terms of a and b both will be 0 and you will get the value of c. क्योंकि x plus 2 a और b दोनों में इन्वॉल्व हो तो दैट इज 0. सो a और b 0 हो जाएगा, वाली टर्म 0 हो जाएगी. क्या आ रहा है? 9 by 2, 5 by 3,
Afan is saying 5/3. And this is a value of C, right? G. Everyone is getting 5/3. Please confirm. Need one more confirmation. 5/3. Okay, good. जी यहाँ पे हम stop करते हैं. We got the values of A and C. Now please look here. Please सब सामने देखें. आपने पहले क्या put किया? X minus 1 0. Mean X is equal to 1. You got one of the answer. Then you use X plus 2 0. Mean X is equal to minus 2. तो आपके पास एक और आंसर आ गया. Now if you see the third denominator, अगर इसको आप 0 करते हैं, ये तो वही है. X plus 2 whole square अगर 0 करते हैं, mean X plus 2 is equal to 0. X is equal to minus 2. ये तो वही है जो आप already put कर चुके हैं. It will give you same result of C. Mean 5/3 दोबारा देगा. B नहीं आएगा आपके पास. Now the thing is कि तीनों डिनोमिनेटर में से 2 denominators were linear. हमने उनको यूज कर लिया to find 2 unknowns. Third cannot be used क्योंकि उसी को यूज करेंगे तो that will be the repetition. So how to find the third unknown? Mean B. A and C हो गया. जी बताइए आइडियाज. देखिए मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन तो मैंने कहा था आप अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन हम x1 और x-2 इसलिए यूज किए थे बिकॉज उससे क्वेश्चन जरा इजी हो जाता है. तो अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और, तो यू कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ x अदर देन 1 and -2, क्योंकि 1 and -2 यूज हो चुके हैं. 1 and -2 यूज हो चुके हैं. सो यूज एनी अदर वैल्यू. -1 पुट कर लें x, और वैल्यूज ऑफ a और c यूज करें जो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं. और 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 3, एंड द इजीएस्ट वन इज पुट x इज इक्वल टू 0. ये फर्दर आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा. पुट x इज इक्वल टू 0. बट अगर कुछ और भी आप यूज करेंगे तो इट विल बी करेक्ट. सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. आई एम यूजिंग 0 डजंट मीन कि आप भी यही करेंगे हमेशा. आप -1, 3, 4 कुछ भी यूज कर सकते हैं अदर देन 1 and -2 which are already being used. बेसिकली हो चुके हैं, उसको दोबारा करने से a और c ही आएगा. रिमेंबर x0 यूज करने से ऑलरेडी आपके पास जो a और c की वैल्यूज आई है वो भी यूज करनी पड़ेंगी. Okay, see, I'm doing this. Step 2 into 0 minus 1 is equal. What's the value of a? 1/9. X plus 2 is 0 plus 2. ये आप लोगों के लिए स्टेप कंप्लीट कर रहा हूं. B, x is 0 minus 1, 0 plus 2. The value of c is 5/3, 0 minus 1. So you have to use any new value of x plus the previous found values of a and c should also be used to get the, because now in this equation you'll see you have only one unknown, that is b. So answer aa jayega. So 2 times 0 is 0 minus 1. थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद लेंथी है. 2 square is 4/9 minus -2b minus 5/3. So 2b on the left, 4/9 minus 5/3 plus 1. Use your calculator. 4/9 minus 5/3 plus 1 and divide this by 2. What is b? 4/9 minus 5/3 plus 1. आंसर को डिवाइड करें 2 से, बताएं क्या आ रहा है. -1/2, -1/9. G, -1/9 is the answer. So write your answer here. I am writing the answer. A is 1/9 x minus 1 minus 1/9 is the value of b, x plus 2. So c is 5/3. दानियाल देखें b 0 नहीं आया तो इसका मतलब x plus 2 वाली टर्म भी आ रही है. So 5/3 x plus 2 whole square.
आई होप दिस इज क्लियर। डिफरेंस क्या था, एक तो फर्स्ट स्टेप में वो सपोजिशन डिफरेंट थी, उसके बाद इसमें एक ये जो आपको, क्योंकि लीनियर टू वैल्यूज आपने फाइंड कर ली थी, थर्ड के लिए आपने खुद से एजम्पशन ली, कोई भी एक्स की वैल्यू एक यूज कर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। So these are the two types of questions we have done. I hope आपको समझ आए होंगे, याद रखिएगा इंशाल्लाह इसको मंडे को हम कैरी ऑन करेंगे and we'll do the third type और फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।